तन्मय is here, so अब हम स्टार्ट करते हैं. Just sending a co-host invitation to तन्मय. तन्मय अगर आप co-host invitation accept कर सको तो हम स्टार्ट करते हैं. Before that, just wanted to kind of mention कि ये जो हमारी स्पेस है इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी नेक्स्ट वीक के इश्यूज आने वाले हैं, प्राइमरी इश्यूज, उनके बारे में बात करते हैं और अपनी रीड बताते हैं. जस्ट वांट टू से कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है और हमारी जो रीड है वो गलत भी हो सकती है डेफिनेटली. तो प्लीज डू योर ओन रिसर्च. आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे बात करके डिसाइड करें. और हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कंपनी में क्या पढ़ रहे हैं और क्या कंपनी अच्छी है कि नहीं, हमारे हिसाब से हम उसके बारे में बात करते हैं और अपना व्यू बताते हैं. आज हम 7 कंपनियों की बात करेंगे. सबसे पहले हम एक मेन बोर्ड कंपनी आ रही है सैनस्टार करके, उसकी बात करेंगे. उसके बाद हम जो SME IPOs ओपन होने वाले हैं नेक्स्ट वीक उनकी बात करेंगे. सबसे पहले SAR Tele का एक FPO आ रहा है. उसके बाद RNFI कंपनी आ रही है, VL Infra आ रही है, VVIP आ रही है, चेतना एजुकेशन आ रही है और मंगलम इंफ्रा आ रही है. सो ये 6 कंपनियां SME जो है जो नेक्स्ट वीक जिनकी क्लोजिंग है. सो हम आइडियली क्या करते हैं कि क्लोज हो IPO से पहले ही उसकी रेट बताते हैं ताकि लोग उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाए कि उनको अप्लाई करना है कि नहीं. सो दैट्स अबाउट व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू टुडे. आई एम जस्ट वेटिंग ताकि कुछ और लोग आ सके एंड उसके बाद हम स्टार्ट करें. बट सबसे पहले आई वुड वांट टू इंट्रोड्यूस बोथ तन्मय एंड रोहित. आई नो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, but Tanmay, Rohit and me, we have been kind of doing this for quite some time, जहाँ पे हम अपनी रीड बताते हैं कंपनी की एंड उसके बेसिस पे we kind of tell if it's a like what we should do with respect to issue. और हम ये जो चीज है ये हम अपनी YouTube चैनल पे भी डालते हैं. सो इफ इन केस आप ये स्पेस मिस कर दो या फिर स्पेस को वापस से सुनना चाहो तो ये हमारी YouTube चैनल है, उस पे भी काइंड ऑफ लाइव रहता है. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एज वेल. वहाँ पे भी हम ये क्लिप डालेंगे एंड टेल अस कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि वीडियो इन इटसेल्फ बिकम्स प्रीटी बिग, सो हम ये भी कर सकते हैं कि हम हर IPO का रिव्यू काट के उसका 2-3 मिनट का जो रिव्यू है वो YouTube पे डालें. सो मे बी दैट विल आल्सो कम सून. सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल. मैंने YouTube चैनल पिन में डाल रखा है. सो definitely go ahead and subscribe to this YouTube channel. But yeah, having said that, we can now get started. Tanmay, Rohit and me, we can first talk about the main board issue. एक main board issue आने वाला है Sanstar. उसके बारे में बात करेंगे, क्या कंपनी करती है, क्या कंपनी का फ्यूचर आउटलुक है और हमारे हिसाब से क्या है. मे बी तन्मय आपको Sanstar के बारे में पहले बात करनी है and then Rohit and me we can add any follow-ups to that. Yes. So Sanstar is a manufacturer of corn-based ingredients for food, pet and industrial solutions. Its products are mainly used in food items like thickeners, sweeteners, emulsifiers, additives, binding agents, etc. And it is used as a nutrition ingredient in pet foods and many other industrial solutions. So it is number 5 in India in terms of capacity and number 4 in terms of the revenue. So this company has 2 plants. One is in Kutch, Gujarat and second is in Dhule, Maharashtra. So this company has a combined capacity of 1100 tons per day. This company plans to raise 510 crores, out of which 397 is going to be a fresh issue and 113 crore is going to be OFS. So this company is going to use 182 crores for capex in its Dhule plant, which is they are going to embark a total sum of 200 crores, out of which 220 crore is already spent and the rest is going to get spent from the IPO proceeds. And they are going to repay a debt of working capital debt of 100 crores and post this repayment they will be left with 35 crores and they aim to be debt free in next 1 to 2 years and the rest is general corporate purpose. So this company is going to double its capacity from these proceeds and this capex, and this capex should get commenced from June 25. This company has given guidance like we are going to expand our EBITDA margins by 200 to 300 basis points and the company aims to double the revenue by 2026 financial year FY26. But what I found is its capacity is currently, its Dhule plant capacity is at 89% utilization at this point, 89%,
and Kutch facility is 81%. So FY25 is not going to be a very blockbuster kind of year in terms of revenue growth or PAT growth. But there is a thing which was same in Bansalwire, like this company has merged with another group company, Sanstar Biopolymers Limited, and the issue here is we don't have enough data on this company. So this company has issued, Sanstar Limited has issued its 15% share capital to Sanstar Biopolymers previous shareholders post merger in November 23, but its financial data points are not available with us. So what FY22 data is, it was at 300 crore revenue. But if we go through CRISIL ratings, I found many discrepancies in the data, means close to 30% changes in the data which has been shown in the RHP and which was recorded by the bank agencies and the CRISIL. So commenting on the revenue aggregative revenue from the Sanstar biopolymers is not going to be very easy. Just I'm assuming that it could make around 15 crore PAT. So in net, I went through its forward earnings and came at like they are pricing this IPO at 14-15 times FY26, and it's so this company is fourth largest. So the number one in India is GAEL, Gujarat Ambuja Exports Limited, which is a bit efficient than this company, and it trades at a 16 multiple, and forward it trades at close to 12-13 multiple, and this company is close to 5 to 6 times larger than Sanstar Limited and GAEL. So the valuations for me seems priced so bullish for long term, but not expecting much blockbuster listing gains on this. थैंक यू तन्मय. I read about the company. मेरे हिसाब से कंपनी जो है एक एग्री कमोडिटी बिजनेस है. सो एग्री कमोडिटी बिजनेस में क्या रहता है ना कि कंपनी जो है, जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर पे काफी डिपेंडेंट रहता है. तो थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया जैसे मॉनसून वगैरह में, तो हो सकता है कि कंपनी, क्योंकि कंपनी बेसिकली ना स्टार्च प्रोसेसिंग प्लांट है और उसका जो रॉ मटेरियल है वो जो Manish, if you're talking, you're on mute. Oh, can you hear me now? No, you are audible. I'm audible. I thought Manish was talking. I couldn't hear him. Okay, sorry. Go on. Okay. सो मैं ये कह रहा था कि ये एग्री कमोडिटी बिजनेस है, और एग्री कमोडिटी बिजनेस में क्या रहता है कि मॉनसून वगैरह का कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है, तो इसलिए भी एग्री कमोडिटी बिजनेस को बहुत ज्यादा पीई मिलता नहीं है. बट हैविंग सेड दैट इसमें ना 3 क्रॉप साइकिल. Manish, you're on mute. Can't hear you. At least I can't hear you. Anyway, meanwhile, I'll just I don't have a lot to add to what Tanmay has said. I think he's covered it well. The biggest thing is that, I mean, most of you guys will be tracking GMP. GMP is indicating, I think I last saw maybe 35-40% GMP, which honestly looks a little hard to believe given the pricing that this is coming at, given the fact that next 1 year is more or less not going to see a lot of growth. And the peers, like if you look at Sukhjit, the trend is very, very similar to Sanstar in terms of the revenue growth over the last 3 years. It's also had a degrowth this year, same like Sanstar. So I don't see why this will have such a big premium. And so the listing pop looks a little hard to believe. So that's just one thing for you guys to keep in mind before you actually, take a call on blocking funds. परफेक्ट. उसके अलावा मैंने एक चीज देखी थी, कंपनी की एंकर बुक ठीक थी. कंपनी में बैंक ऑफ इंडिया आई है एज एंकर. उसके अलावा SBI जनरल आया है. उसके अलावा मिहिर वोरा जी इसका ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जो है, जो कंपैरेटिवली एक नया म्यूचुअल फंड है, उसने हिस्सा लिया है. सो एंकर बुक ठीक लग रही थी. कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो काफी अच्छा है. कंपनी इज प्लानिंग टू डू 1000 टन्स ऐड कर रहा है अपनी कैपेसिटी में. दे विल गो up from like 1100 टन पर डे से 2100 टन चले जाएंगे. सो विच लुक गुड. बट हैविंग सेड दैट, आई फील जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी आ रही है 26 PE पे, दिस ऑल सीम्स टू बी बेक्ड इन एंड देयर इज वेरी लिटिल मार्जिन फॉर एरर. सो उस हिसाब से देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे क्या होता है. दैट्स अबाउट माय रीड ऑफ सेंस्टार जो मुझे लगा. बट हैविंग सेड दैट, तन्मय, आपको अगर इस कंपनी को रेट करना है, हाउ वुड यू प्रोबेबली रेट दिस ऑन अ स्केल ऑफ 10 एंड वुड यू बी अप्लाइंग?
बिकॉज हमें एक क्वेश्चन आया था कि डेफिनेटली शेयर क्या आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल। ऑल्दो जस्ट वांटेड टू से कि हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड होता है लास्ट डे पे, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे स्पेशली मेन बोर्ड पे क्या होता है, QIBs कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो कितना माल सब्सक्राइब करने के लिए डाल रहे हैं और उसमें से उनको कितना अलॉटमेंट मिलेगा, वो सब देखना पड़ता है। सो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू काइंड ऑफ नो एंड वेट टिल द लास्ट डे। बट व्हाट वी कैन डू इज, हमारे हिसाब से अभी क्या चल रहा है वो हम बता सकते हैं, बट अगेन वांट टू से कि वो बहुत प्रिलिमिनरी होगा, सो थिंग्स माइट चेंज इन द फ्यूचर। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट फैक्ट। हैविंग सेड दैट, Tanmay, over to you. Before giving the rating, I'll just add one thing. So this Dhule plant in Shirpur Taluka, where this company has its largest manufacturing facility, just 2.5 hours away from my hometown. And this time the rain there is pretty low, okay? And what historical trends we have seen is the maize prices as a commodity changes in the range of close to 8 to 10%. So maize is one of the lowest water consuming crops, so it's not a big deal, but yes, it impacts the margins due to the logistics issues, because it's the area is widespread, so you have so that water concerns and that all this stuff affect the margins heavily. And the point which I had mentioned earlier, this merger of its group company, that if that data would have been out, it had been more clear, because in case of Bansal Wire, we had the data, most 90% we had accurate data, so we could figure out, but this is not maybe if that data is very good, we can revise this in future, but as of now, nor the management or nothing in the RHP doesn't have any kind of sense regarding its past revenues. Actually, its rule, if you are merging or acquiring any entity, so you need to mention the financials and data points of the past. Like if you acquired the company in FY24, at least till FY23 you should have data, but in RHP it's not mentioned, so it's very tough for us to get into that. And this CRISIL ratings I went through, very the discrepancies are very high. Literally they are saying this company made a 25 crore PAT in 20 crore PAT in 23. These guys are saying 40 crores. So the discrepancies are high. So so I'll go now. I'll come to the rating now. So for listing in, I'll go 4, and for long term, I'll go 6, 7. Just I like to add one point that this it's going to list after the budget volatility, and now you know that yesterday there were Reliance results. They were in line or a bit negative. So and this today we have SDFC and Kotak results. So this the market volatility is going to be very high. So please be cautious. If don't go for this 20% listing gains. If you're sure that I'm even happy with 5-10%, then only you should apply for listing gains. Otherwise, it's good for long term. Got it. मेरी तरफ से भी लगभग सेम सजेशन रहेगा, प्लस ये भी समझना पड़ेगा कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है फॉर अ मेन बोर्ड में 500 करोड़ का रेस इज नॉट अ बिग रेस। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना जो अमाउंट है उसको उस हिसाब से टाइम कर रहे हैं, क्योंकि इसके सेम टाइम पे कई सारे SME इश्यूज भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अमाउंट डाल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल फील दैट द कंपनी में अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, बट काफी कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है इन प्राइस। So listing gain kind of be muted, but long term के लिए कंपनी अगर जो बोल रही है वो करती है, so should be able to show good growth even although it is an agri commodity. Over to you, Rohit. Do you have any parting comments on Sanstar before we move to the SME issues? Just one. Firstly, I'm sorry. I think I interrupted you. I could not hear you speaking at all, though I could hear Tanmay. Anyway, now that I've gone, I exited and re-entered, so now I can hear you fine. Just in terms of parting comments, I am planning to mostly apply just small HNI here. I normally do big HNI in most main boards, especially where I have confidence. But here I'll mostly do small HNI and save the money for the SME issues that are overlapping. So yeah, I don't have such high confidence on this company and its listing gains. Perfect. अब हमने मेन बोर्ड क्लोज कर दिया, तो इट्स अ गुड सेगवे ऑल्सो। आपने SMEs की बात की, सो मे बी वी कैन स्टार्ट विद SME। सबसे पहले हम बात करते हैं वही
highly spoken about company SAR Tele जिसका FPO आ रहा है. So FPO essentially stands for Future Price Offering. FPO में क्या होता है, कंपनी बेसिकली अगर कोई IPO करती है, IPO होता है इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, उसमें सबसे पहले कंपनी पब्लिक जाती है. पर अगर कंपनी को फिर से फ्यूचर में पैसे रेज करने हैं तो एक तरीका वो उसका है FPO करने का. सो SAR Tele FPO भी लेके आ रही है और राइट्स इशू भी लेके आ रही है अपना. सो इट्स अ बिग कंपोजिट इशू व्हिच इज कमिंग इन एंड सबसे पहले यही क्लोज हो रहा है. आई थिंक थर्ड डे इज मंडे इटसेल्फ, बट maybe Rohit, do you want to talk about SAR Tele and then I can add a few comments and Tanmay can add a few comments from our read. Okay, perfect. So yeah, I'll cover SAR Tele. It's a very, very big issue as far as SME is concerned. The component that is relevant for us, which is the FPO piece, is 150 crore, which will be probably the second largest that we've seen, after KP Green. This is though part of a larger fundraise. There is also a rights issue, and the overall issue raise is almost 450 crore. I think of that 200 crore is coming just from the promoter. So it shows that they own that percentage of the company, and so that's their part of the rights issue, which they are themselves infusing, which in a sense it shows actually good confidence on the business. Now what SAR Televenture actually does is they are in the telecom space primarily. When they came in for their IPO, they were in the in the tower laying sort of space, something like Industars, a very, very small competitor to Industars, which has majority market share. Interestingly, only about 5% of their revenue actually comes from this business. 95% of their revenue comes from their subsidiary, which they acquired last year in 23, which does trading mostly. So at least when they acquired it, it was mostly into trading. They've then moved, or that subsidiary has now shifted more towards the telecom segment in the form of FTTH, which I'll come to, which is fiber to the home. Now I think that makes up 80 crore or so, which is 70% of the revenue of this overall entity. So just the important thing here is only 5% of the business actually comes from the India entity. Everything else comes from the subsidiary in the UAE, which at least is in the same space now. They were earlier doing like food trading and stuff. So at least now that is not an issue. Now coming to the purpose of this raise, this 450 crore, what they've said is there are two primary uses of money. I'll just cover the big ones. One is they have entered into term sheets with basically BSNL to supply FTTH, which is essentially, or largely look at it as your sort of broadband lines that come to your home. They've tied up with BSNL across a whole bunch of cities in North India. Every few weeks, you will see one, update on the NSE portal from SAR Televenture saying they've signed this up in Mohali or in Lucknow or Gurgaon or whatever. They've been doing this over the last few months. That I think they have about. So as per the FPO, they are planning around 300,000 of these passes. Basically, a certain number of societies into a certain number of houses in each society gives you about 300,000 of these. And they say that they have already signed up for half of that. They have agreements in place. And it all looks like it's with BSNL only. The second thing that they're using this for is to actually lay towers again. Now, this is something that they seem to have reduced in the last couple of years. They had gone to about 350 towers till 23. They were laying about 150 towers. Last year, they added only 40. And since then, they have not added any. But now they are saying that they're going to use this funds to lay another 1,000 towers, 1,000 to 1,500 in the RHP. They use both numbers. So I don't know which is the right number, but let's take the conservative, this thing of 1,000 towers. So the way I'm looking at this business is I just try to calculate the mathematical impact of both of these two businesses, what kind of revenue and bottom line impact that would give, and try to run that against the current, market cap of this business to see if this is fairly priced, not fairly priced. There is, of course, an execution percentage that you will have to take, but let's just say they executed beautifully. I just wanted to see what that means, and is this, issue worth subscribing to or not. So if you just look at the towers today, they drive about 6-7 crore revenue from 400 towers. If they take this to 1,500 towers, that is, you can say another somewhere between 15 to 20 crore of incremental revenue. This will take time. None of this is going to happen in FY25. It will all happen in FY26 only in the best case. But you can drive potentially 15 to 20 crore more revenue.
Similarly, the home passes again is going to happen only by next year. You can assume that somebody would pay them perhaps 500 rupees per month per home pass. This is basically someone is paying BSNL 1,000 rupees, and these guys would keep 50% of it as per the agreements that I've seen. So when you take that and look at the number of home passes, if they were to get 100% of all the home passes, they would generate another 150 crore of incremental revenue, which is actually quite significant. I don't know if they'll actually get 100%, but even if you take 70-80%, that could be maybe 120 crore of revenue. My understanding in both of these segments is your PAT tends to be in the 20, because these are very, very capex intensive kind of place. The PAT actually is quite high. It'll be in the 25 to 30% range. You can look at an Industars, look at a Suyog. All of these guys operate in this 25 to 30% PAT margin. So the incremental PAT from what they are doing is about, in my view, maybe 40-45 crore by FY26. This is subject to 100% execution. They already are generating around 15-16 crore PAT. So it looks like this business could be generating 60 crore PAT next year if they execute beautifully. Today, the market cap, post FPO at the FPO price, I think about 780, 790 crores, something in that range. This is, of course, including all the funds that are coming in. So it actually looks okay to me. It is a bit of a long-term bet. It is not that expensive on next year's numbers. The market obviously is giving it a little bit of premium to the FPO still. I think last traded price was 240, 245 in that range. That's what the GMP is sort of also indicating. We saw this with Vodafone. Nobody really knew what would happen. Would it list at a discount? Would it list at a premium? And we saw what happened with Vodafone. It listed at what was LC, and it just shot up completely. So I am actually moderately bullish, especially after looking at the quality of the anchors with Bofa and again and all taking huge positions. So I am actually going to apply for SAR Tele. I don't expect a huge pop, but it's a large size issue, which means it will be possible to get allocation, maybe a couple of lots, and you might be able to make that 15-20%. It does look possible. So that is my read. Open to both Manish and Tanmay's views, whether they're same or different. Sure. Maybe मैं पहले स्टार्ट करता हूँ. तो कंपनी जैसा रोहित ने बताया टेलीकॉम एंसिलरी में मेजरली बेसिकली मैं एक बात बता दूं कि एफपीओ अलग कैसे होता है एक नॉर्मल आईपीओ से. एफपीओ जो होता है क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी लिस्ट हो रखे हैं, तो एफपीओ ना 9 से 907 वाला जो प्री ओपन पीरियड होता है उसी में ही नए शेयर्स आते हैं मार्केट में और उसी में ही डिसाइड होता है. सो यूजुअली क्या है 45 मिनट्स का पीरियड रहता है फॉर प्राइस डिस्कवरी, विच इज स्लाइटली फ्लॉड राइट नाउ बिकॉज उन्होंने कैपिंग लगा रखी है. बट उसके अलावा 45 मिनट पीरियड वाज अ लॉन्गर टाइम. बट इसमें क्या होता है सिर्फ 7 मिनट का पीरियड रहता है. सो देयर इज अ हाई चांस फॉर समथिंग बीइंग मिसप्राइस्ड कंपेयर्ड टू अ 45 मिनट पीरियड. तो जैसे रोहित बता रहे थे वोडाफोन में भी प्रोबेबली ऐसा ही हुआ था, क्योंकि क्या होता है अचानक से शेयर्स ना ऑलमोस्ट डबल हो गए क्योंकि इतना बड़ा 150 करोड़ का रेज है. उसकी वजह से अचानक से उस दिन ना जब ये लिस्ट होगा 29 तारीख को बहुत सारे शेयर्स एक साथ आएंगे मार्केट में. सो पीपल डोंट नो द वैल्यू. सो मेक श्योर, तो उससे हो सकता है कि आपका प्राइस डिस्कवरी थोड़ा सा फ्लॉड हो. सो मेक श्योर अगर इसको रख रहे हो तो वो 9 से 907 में डू यू वांट टू सेल, डू यू वांट टू कीप, उसका थोड़ा बेटर ध्यान रखो देन कंपेयर टू जो आप कई बार ना आईपीओ में प्री ओपन में सेल कर देते हो. सो दैट्स अ वन मेजर डिफरेंशिएशन पॉइंट फ्रॉम एफपीओ. बाकी उसके अलावा ये ना एक कंपोजिट इशू भी है, तो इसके साथ ही इसका एक राइट्स इशू भी आ रहा है. 200 राइट्स इशू में क्या होता है कंपनी के जो प्रीवियस शेयर होल्डर है उन्हीं को वो राइट्स देते हैं. यूजुअली क्या होता है राइट्स इशू में कंपनी ना 3 या 4 सेक्शंस में पेमेंट लेता है कि 25% पैसा आज दे दो, 25% पैसा 6 महीने बाद देना है. ऐसे करके कुछ कंपनीज डायरेक्ट पेमेंट ले लेती हैं, कुछ कंपनीज सेक्शन में पेमेंट लेती हैं. इसका जो पूरा पेमेंट है वो वन शॉट में, तो इसमें कुछ राइट्स इशू की वजह से बेनिफिट नहीं है. जो मैंने अभी टेंटेटिव चित्तौड़गढ़ पे डेट देखा था, राइट्स इशू 30 तारीख को आ रहा है, ये 29 तारीख को आ रहा है. सो एक दिन बाद है राइट इशू. तो अचानक से ना काफी ज्यादा शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे. So उसका कुछ volatility हो सकता है which needs to be factored in per se. But in terms of like the company, Rohit has beautifully covered what the company does, what are the future aspects of the company, and basis that it seems like on forward multiples it is not expensive. At least that's my read. But in short term, क्योंकि supply इतना ज्यादा आने वाला है, so I am slightly more cautious in terms of like giving a rating. Over to you, Tanmay. Rohit has articulated it very beautifully, so I won't add anything on the business model, but what I saw is 150 crore is the FPO and rights, it's a composite issue. So what free float was earlier, it's just going to get doubled.
So the volatility between that pre-opening session and the difference between the cutoff FPO price and the CMP is 16%. और 16% यार मतलब निकल जाने को वक्त नहीं लगता है. तो नो, इफ यू लाइक द बिजनेस यू शुड गो पोस्ट लिस्टिंग ऑफ द FPO. 2-4-5 दिन सेटल होने दो, फिर खरीद सकते हो. आई वुड से कि लाइक आई एम पर्सनली थिंकिंग टू अवॉइड इट. परफेक्ट, दैट्स द ब्यूटी, राइट. हम लोगों का आपस में भी ओपिनियन अलग अलग हो सकता है एंड वी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन एंड उसके बेसिस पे एक्ट करते हैं. द आइडिया है कि हम अपने बस ओपिनियन शेयर करें और उसके बेसिस पे देखें. बट हैविंग सेड दैट, अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं. SAR Tele अपन ने बात कर ली. अब जो रेगुलर 5 नए IPO आने हैं नेक्स्ट वीक में, मे बी वील स्टार्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहले RNFI का एक IPO आना है जो कि RNFI Services, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लाइक बैंकिंग वगैरह में काम करता है, फॉरेक्स बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइडर. सो Tanmay, do you want to go ahead and talk about RNFI? So RNFI is an fintech company which provides solutions through its online portal and mobile application which is named as ReliPay. So it works in B2B and B2B2C. So this company acts as a business correspondence and non-business correspondence and insurance broking for the insurance broking industry. So this company has partnered with 11 financial institutions. This company plans to raise close to what's the amount? 1 minute. $70 crore. सर आवाज आ रहा है? हाँ जी तब. हाँ, so this company plans to raise 71 crore. So they are going to embark this for funding their working capital expenditure, then capex, then strengthening their technological infrastructure. Then they have embarked some amount for inorganic growth and remaining is GCP. So what this company is trying to do, this company is trying to build a high volume platform. This company aims to scale their forex business. In past we had seen a kind of such business which was BLSE services. So this company can scale well, but what I found is their margins are pretty low. They aim to scale it, but the valuations they are commanding are pretty fully priced. And what we can say is this price to book is close to 6%, and the track record of the lead manager is quite limited. They have in past concluded that 2 issues. One was the main board Vishnu Prakash Arpungle, and the second one was, what I'm remembering, is Ramdev Baba Solvent. So, and this company is aiming for their branch expansion from 15 to 100. So in future this company can scale well, but the thing here is execution and the margin expansion. So I feel you can let it list and then see act on it from an investing point of view after seeing 1 or 2 results. But for listing it seems like a kind of small to medium kind of 20-30% and good for long term. So not an highly overweight apply rating, but it's reasonable, not very bad, not too good kind of. परफेक्ट, थैंक यू तन्मय फॉर योर रिव्यू. मैंने भी ये कंपनी देखी थी. मेरे हिसाब से ना ये कंपनी फिनटेक कंपनी नहीं है यार. इट्स अ ऑपरेशंस कंपनी कमिंग इन डिस्गाइज एज अ फिनटेक कंपनी, क्योंकि कंपनी मेजरली 70% धंधा जो है वो फॉरेक्स से करती है. अभी उसके 15 स्टोर्स हैं जो कि उनको सर्व करना है, और फॉरेक्स में ना काफी लिमिटेड मार्जिन होता है अभी. पर वो ना ऑथराइज्ड डीलर 2 बन जाएंगे. जैसे ही इनका IPO करेंगे तो उनका नेटवर्थ बड़ा हो जाएगा. तो जैसे ही नेटवर्थ बड़ा हो जाएगा तो उनको AD2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. AD2 का सर्टिफिकेट मिलते ही क्या होता है, वो लोग ना डायरेक्ट कंट्रीज से फॉरेक्स खरीद सकते हैं और इंटरमीडिएटरी प्लेयर्स को हटा देंगे. तो उससे क्या है, होप है कि जो मार्जिन है वो बढ़ जाए. पर अभी जो ये 70% फॉरेक्स का धंधा है उससे मार्जिन नहीं आता है. सिमिलरली 15% धंधा जो आता है वो इंश्योरेंस से आता है. IRDA का इनके पास लाइसेंस है जिसके थ्रू ये इंश्योरेंस सर्विसेज बेचते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं आता है. ऑल ऑफ दिस आई थिंक ऑफ देम एज कि अभी तक वो बढ़ रही थी कंपनियां, और फ्यूचर में जाके इनमें
पोटेंशियल है. जो अभी मेनली कंपनी का बिजनेस आता है और बॉटम लाइन आता है वो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और नॉन बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सर्विसेज से आता है. ये क्या होती है कि कंपनी के पास कई सारे एजेंट्स हैं जो उनसे टाई अप किए हुए हैं. उन एजेंट्स के थ्रू कंपनी जो नॉन बैंकेबल रीजन्स है उनमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. किसी को पैसे जमा करने हैं बैंक में, किसी को बैंक से पैसे विथड्रॉ करने हैं, किसी को रिचार्ज कराना है, किसी को अपनी टिकट करानी है. ऑल ऑफ दोस फीचर्स आर एसेंशियली प्रोवाइडेड. आई फील थोड़ा सा वो सनसेट सेगमेंट है, इसलिए company is trying to move to a bit more sunrise segments. The valuation seems pretty decent, but again I want to say it's not a out and out fintech company. इसमें हमेशा एक ऑपरेशन, इट्स ऑपरेशंस कंपनी, क्योंकि अगर ये फॉरेक्स खोल भी देती है तो भी वो 100 ब्रांचेस पे खोलेगी और ब्रांचेस क्या लीनियरली स्केल अप होती हैं. सो दैट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आई आल्सो फील कि इसमें ना लाइक इट कांट go ahead and exponentially grow. That's why I'll also be similarly like looking at it only from a short term period of time. और अगर मेरे को long term view देखना भी है तो I would want कि इसके एक दो रिजल्ट्स आने दो या फिर कंपनी क्या कर रही है उसको मैं ट्रैक करता रहूं. सो इट्स अ डेफिनेटली गुड कंपनी टू ऐड इन द ट्रैक वॉच लिस्ट की कंपनी आगे क्या करती है और उस हिसाब से फिर हम देखें. दैट्स माय थॉट प्रोसेस. I'll add one point here. So this company is thinking to do some good networking, and actually the size of business is pretty good. But means if this company tries to do some cross selling in future, then that can upscale their margins, and this insurance broking can also do well. But the thing is, if even I went for like 70-80% PAT growth, still the valuations are like kind of in line. Means I know these companies get high valuation, but it's an SME company. You can't expect this company getting the valuation of Zygal and VVIP Services, kind of fintech players. So this company always get like 20-25 multiple on that. 20-30% listing gains are visible, and if anyone wants to add, can go for 1 to 2 years or 3 years view. Don't go for very short term kind of, because the liquidity post listing is going to be high. It's a 70 crore issue. Many people think that we will go for post listing, so you may get trapped due to high liquidity in it. Perfect. Thank you, Tanmay, for sharing your view. One question: do you अभी प्राइमा फेसिया जो आपका व्यू है, do you plan to apply for its IPO? Yes or no? Because I know वो question. I can apply, but not going very aggressively in it. I'll go for few retails from multiple accounts, but not going in HNI. सेम फ्रॉम माय साइड. आई कैन अप्लाई, बट अब जो नेक्स्ट दो इश्यूज हैं वो दोनों काफी इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं एंड दोनों ही काफी सनराइज इंडस्ट्रीज हैं एंड इंडस्ट्रीज व्हिच हैव बीन वेरी हॉट. सो डेफिनेटली कीप द नेक्स्ट टू कंपनी जो हम बात कर रहे हैं ऑन योर रेडार. बट वही है कि उनमें ना कंपैरेटिवली सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आएगा. जो नेक्स्ट कंपनी हम बात करने वाले हैं VL इंफ्रा, आई फील कि वो छोटा सा इशू है, इसलिए उसमें तो सब्सक्रिप्शन विल बी थ्रू द रूफ फ्रॉम माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. बट मे बी रोहित, डू यू वांट टू गो आप एक बार, डू यू वांट टू टॉक अबाउट VL Infra? Yes, I'll cover VL Infra. So this is in a space now where we have seen a lot of IPOs coming recently. This is in the water supply space. Now, to be clear, this is actually a pretty small company. They do about 100 crore revenue, about 5-6 crore PAT. They're exclusively into water supply. They have not got into any of the treatment, sewage, any of the slightly more technically challenging aspects of water. They are, in a sense, very, very similar to Tirth Gopikon, minus the order book. So these guys also started as small subcontractors. They found a niche in water, and now they are fairly well embedded in the small projects with a few state governments. The biggest one being Gujarat, and they are part of that Jal Jeevan scheme. And in this segment, it is such that you have to start small. You have to start with small small diameter pipes, as you and a certain length of piping. And as you do that, you then get eligible to do projects that are 2x, 3x. Then once you complete those, you get eligible for the next size and so on. So the scaling in that sense is somewhat linear and step by step. But I would say what at least I can see is they've done a really good job in being a steady sort of business, steadily growing, continuously trying to improve a little bit, trying to move into slight adjacencies. For example, they have taken some small subcontracting projects in roads with a view to get into full-fledged road contracting down the line. So the company looks good. The promoter looks pretty decent. He speaks quite knowledgeably. So my only, I would say, relative concern here is that they're a very
steady kind of business. They're not this particular one, and the way they talk about it, the way their order book is, the way they are projecting their numbers and their growth, it's very steady. We'll grow 25 to 30% year on year, as opposed to, like some of the, like Teeth, right? The guy came and said that I'm going to go from 100 to 250 crore next year. So that kind of aggression and that visibility of order book is not there. So that is my concern here. The other thing is they've mentioned that they have an order book of 340 crore, but over half of that order book has been executed. So their unexecuted order book is only 160 crores. So that's the right number to look at, which at, is about 1.5x of sales, which is not very large. Many of the businesses that I say that are very hot and that get a lot of, interest post-listing have sizable order books, which gives a lot of visibility. Though the management is saying that they will do their best, once the funds come in, that will help them bid for bigger orders and so on. So it's coming at a very attractive valuation. I think it is sub around 10p, 10.5p, which is obviously cheap given where the sector is trading at today. So it's a guarantee that this will list with the 90% pop. There's a good chance it will also have a few UCs after that. So it looks like a no-brainer for application. It's a small size issue. 18 crore means the HNI and retail components are going to be really small. It is a book built issue. So again, it means that it's going to be really, really tiny. I personally actually like VVIP more, which Manish will talk about, but you cannot go wrong by applying for this issue. But I just feel that this is not going to run the way some of the other players. Let's just take Teeth, right, as a classic example here, getting to some crazy multiples and running with it like real frenzy. This looks like a much more steady business. The promoter is also thinking in a much more steady way. So just keep that in mind before expecting this to get crazy 30, 40, 50p kind of multiples. So I feel that once it reaches listing and immediately after listing, that's about it. That's the sort of place it will stabilize. Forgetting what the flippers will do in the first few days to sort of boost the price, I feel eventually it will come back around that 20p or so. So that is my view here. Thanks, Rohit. मेरा भी काफी सिमिलर व्यू था. आई वाज लुकिंग एट द कंपनी. इट्स अ स्मॉल साइज इशू. तो कंपैरेटिवली शुरुआत में हो सकता है कि प्राइस डिस्कवरी थोड़ी सी मिसअलाइंड हो. डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड अगर आप स्पेशली लिस्टिंग या उसके बाद खरीदने की सोच रहे हो तो कि स्मॉल साइज इश्यूज में होता है लाइक थोड़ा सा कंपैरेटिवली मैनिपुलेट करना इशू प्राइस को आसान होता है. सो दैट माइट बी वन ऑफ द केस. बट हैविंग सेड दैट द कंपनी लुक्स रियली गुड. 160 करोड़ का पेंडिंग ऑर्डर बुक है. कंपनी ने 114 करोड़ किया है 6 करोड़ के पैट पे. 65 करोड़ मार्केट कैप पे कंपनी आ रही है. सो सिर्फ 65 करोड़ मार्केट कैप पे रेस कर रही है. सो उस हिसाब से 10 PE पे आ रही है. द कंपैरेटर्स आर ट्रेडिंग एट 20 फॉरवर्ड PE. लाइक जैसे तीरथ शुड एसेंशियली अभी 13-14 फॉरवर्ड PE पे, बट उसकी बात ये चल रही थी कि इट शुड ट्रेड एट 20 फॉरवर्ड PE. सो उस हिसाब से काफी स्कोप है कंपनी में. वन थिंग व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इज इसका जो LM है लीड मैनेजर वो बीलाइन है. मार्केट मेकर स्प्रेडेक्स है. सो बीलाइन प्लस स्प्रेडेक्स इज कंसिडर्ड अ गुड कॉम्बिनेशन इन द मार्केट. सो दैट्स वन गुड थिंग एज वेल अबाउट VL Infra. From my side, I will definitely be applying in this issue. It's just that हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें subscription कितना है और कितना apply करना है in order to try and secure some lots. Although on my side, the luck hasn't been going my way. So let's see. Maybe we can now move to the next issue, which is VVIP Infra Tech. मैं थोड़ा उसके बारे में बात कर सकता हूँ. And then I can ask Tanmay and Rohit to talk about the company as well. Just some hard facts out of the way. The company is trying to raise like 61 CR. Company 61 CR raise कर रही है. Market cap 232 करोड़ पे आ रही है. NSE पे आ रही है. Book built issue है. सब fresh issue है. No offer for sale. In terms of like company क्या करती है? Company ना एक B2G company है. B2G is business to government. Very similar to VL but at a bigger scale. Company public amenities का business करती है. And उसमें क्या होता है? कई सारे central government के फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेशनलाइज करती है. उन प्रोजेक्ट्स को करती है जैसे कि जल जीवन हो गया वगैरह. सो इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ यू विल थिंक ऑफ ऑल ऑफ दीज वाटर थीम प्रोजेक्ट्स. कंपनी का मेजरली 3 प्रकार के बिजनेस है. एक हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवर नेटवर्क. इससे अराउंड 20% ऑफ बिजनेस आता है कंपनी का. इन FY
FY24 FY23 में यही बिजनेस जो था 70% था, तो ये इसमें सीवेज ट्रीटमेंट में ना कंपैरेटिवली थोड़ा डीग्रोथ आया है, बट दैट हैज बीन मोर देन कंपनसेटेड बाय द सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस व्हिच इज वाटर लाइंस एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वो होता है जो जल जीवन मिशन के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें इनके पास यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो धंधा है ये अराउंड 60% है FY24 में आउट ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू व्हिच वाज एसेंशियली लाइक 20%। एंड देन उसके अलावा ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन भी करते हैं और उनकी स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस व्हिच द कंपनी करेंटली डज। एंड इन ये जो सीवेज वगैरह का काम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम ये करते हैं, और उसके अलावा इनका O&M भी करते हैं, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अराउंड 10% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, जबकि 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम B2G प्लेयर्स जो ये टेंडर्स डालते हैं और जो एक्सेप्ट होते हैं टेंडर्स उसके बेसिस पे। जो कंपनी है इट्स अ फेयरली ओल्ड कंपनी, 1988 में स्टार्ट हुई थी, तो 30-35 years of work ex. It was started by the promoter, and then the promoter's 2 sons have also joined the company. So that way it has been growing. कंपनी का जो जोग्राफिकल बेस है वो मेजरली उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वगैरह का काम करती है कंपनी, एंड देन वांट्स टू एक्सपेंड टू दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। सो थिंक ऑफ इट लाइक जैसे VL गुजरात में है, तीरथ गुजरात MP में, सिमिलरली दिस इज अ उत्तराखंड UP सॉर्ट ऑफ अ प्ले। कंपनी मेजरली एसेट लाइट बिजनेस करती है, जहाँ पे ये ना जो JCB वगैरह होती है या जो भी ड्रिलिंग मशीनरी होती है वो खुद की बुक्स पे नहीं रखती है, वो लीज करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री अपन को पता है कि सीवर और वाटर ट्रीटमेंट का काफी काम अभी स्टार्ट ही हुआ है। सो देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ रूम फॉर फ्यूचर एज वेल, वेयर जहाँ पे हर सिटीज में ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे, उनका नेटवर्क बनेगा, और उसमें ये कंपनी आएगी। कंपनी की जो ऑर्डर बुक देखेंगे, सो द कंपनी हैज ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 477 CR एज ऑफ 31st March 477 CR है। उसके अलावा उनने अराउंड 900 CR का और LOI टेंडर डाल रखा है, जिसमें से उनके पास लेटर ऑफ इंटेंट है 210 करोड़ का, अराउंड 176 CR का इलेक्ट्रिकल वर्क का टेंडर है, और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का 32 CR का टेंडर है ऋषिकेश में से। सो कंपनी की कंपोजिट ऑर्डर बुक ना अराउंड 600 करोड़ हो जाती है, और जो एग्जीक्यूशन पीरियड कंपनी के हिसाब से वो रफली 18 मंथ्स में ये लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं ये ऑर्डर्स। तो कंपनी की ऑर्डर बुक कंपैरेटिवली अच्छी है, 600 करोड़ की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, जिसमें से और इनका करंट रेवेन्यू अराउंड 215 CR है। तो अगर आप 18 मंथ्स का एग्जीक्यूशन पीरियड देखोगे तो उस हिसाब से आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो कि कंपनी का कैगर ग्रोथ क्या हो सकता है। ऑल्दो मैनेजमेंट हैज आल्सो गिवन अ गाइडेंस कि वो आगे कैगर ग्रोथ क्या करेंगे, सो दे फील दैट दे विल बी एबल टू डू अ 30 to 35% कैगर इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, which should look brilliant if you think about how they have been growing. कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन EMS, विष्णु सूर्या, some of these players are in competition, and typically they are trading at like 21 to 23 PE. और कंपनी जो है अराउंड, as I said, the company was trying to raise close to 60 CR. इसमें से 10 करोड़ की उनको मशीनरी खरीदनी है पहली बार। They are moving from a capex light model, asset light model, to having some kind of machinery on its book, and then most of the amount would essentially go into working capital, managing the working capital. Looks like a really good business, really solid business, and something which should do well in the long term per se. That's my very initial first read, but over to you, Rohit and Tanmay, to talk about your read. I'll just add couple of points. I think one is they have a subsidiary which contributes another 70 crore of revenue, which is into infra construction. So this is very similar to Mason Infratech, similar to Chavda. So the two put together make up their overall business. It's not clear what the order book is for the infra play, but you basically get two types of businesses in one, and both seem to be doing well. Both have been growing independently. So there is a little bit of diversification there. The second thing that I found impressive was their ability to win absolutely huge orders. They're doing this in the form of JVs with other companies, and all of these JVs, they are the largest component of the JV, but they are winning 400 crore, 500 crore, 600 crore orders. And of course, they take maybe 35, 50%, whatever, some percentage of that as their component. But I found that to be extremely impressive.
And that's generally the first step to then trying to win a 500 crore order yourself. And so these guys are making the step, or they've made the step up from being a small subcontractor to a contractor to these large JVs to, I guess, they will start competing with an EMS or any of these other players very soon. So I found this transition to be really good, and I think it's coming at like a 10-11 PE again. So I feel this one is the one that has very good short-term upside. At least GMP was not looking that high to me. I don't know what the actual traded GMP is, but online it was looking quite reasonable. So I will probably go all in on this one. Yep, that's the GMP, Rohit, जो कि online दिखा रहा है, but that usually is never the right GMP. So I had tried finding out a bit more about that detail. It seemed that there wasn't a lot of selling in this issue per se. But Tanmay, आपका कोई read है इस company पर? Actually I found this company very attractive. मतलब ना सबसे अच्छा मुझे लगा इस इशू का टाइमिंग यार, बहुत अच्छा टाइम किया इन्होंने इशू. और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना फ्रॉम अ स्मॉल मीडियम कंपनी टू लार्ज कंपनी, यही होता है कि आपको आगे का फ्यूचर ग्रोथ लेने मतलब क्या अर्न करने में आपको एक मिलता है सब. और इसका वैल्यूएशन देखो ना मैं तो ये 10-11 पी दिखता है, बट इसका बैलेंस शीट साइज, सरप्लस, फ्यूचर सारी कैपेबिलिटीज इसकी, वो सब देख के लगता है कि इन्होंने ना प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा रीजनेबल रखा है. और ना मतलब ये 3-4 गुना हो सकता है यार बहुत कम समय में. तो ऑल इन ऑल मतलब आई एम फुल फोर्स अप्लाइंग इन दिस इशू. Perfect. हम लोग अपने chances कम कर देते हैं actually ये करके, but then that's okay. What do you want to do is just kind of share what our read of the company is. I also like this issue. Share India का issue है. Share India is also a decent book running lead manager, so that's also a good part about the issue. I have pinned my YouTube channel as well. We'll kind of put all of these reviews on YouTube channel as well, so it's in pinned comments. You can go ahead and subscribe to the YouTube channel as well, and we'll continue to post these. But having said that, we can kind of move on after having covered VL and VVIP, which was some of the major issues which we are kind of very positive and excited about. Next week kind of want to talk about 2 more issues which are coming in. Infra is a big boom, so infra में एक issue है Mangalam, and then चेतना एजुकेशन करके एक कंपनी आ रही है. मे बी मैं पहले चेतना एजुकेशन के साथ स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम मंगलम पे एंड करेंगे, बिकॉज इंफ्रा इज ऑब्वियसली अ लॉट मोर हॉटर दीस डेज, तो उसको लास्ट के लिए रखते हैं. बट हैविंग सेड दैट, चेतना एजुकेशन अगेन बेसिक्स आउट ऑफ द वे, अराउंड 170 करोड़ कंपनी वैल्यूएशन पे आ रही है और 46 करोड़ रेस करने की कोशिश कर रही है. तो कंपनी जो है वो एडटेक सेक्टर की है. बेसिकली एडटेक सेक्टर में क्या करती है, बुक्स सेल करती है. सो बेसिकली बुक्स पब्लिश नहीं करती है, खुद पब्लिशर हाउस नहीं है. पब्लिशर हाउस इनका आउटसोर्स्ड है. ये क्या करते हैं, बेसिकली बुक्स बनाते हैं कि उसमें स्टडी मटेरियल बनाते हैं, क्या क्वेश्चनियर डालना चाहिए सीबीएसई और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साथ टाई अप करके, एंड देन उसके बाद ये बुक्स डिफरेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स वगैरह को थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं. सो इनका वेयर हाउस खुद का है इन भिवंडी महाराष्ट्र, जिसके थ्रू इनके 2 CNF एजेंट है, जिनके थ्रू ये नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में किताबें सप्लाई करते हैं. एंड उसके अलावा जो इनका पेपर परचेज वगैरह है वो भी खुद से करते हैं. फिर उसके बाद पब्लिशर को बस आउटसोर्स कर रखा है कि उसको वो किताबें बनवा के फिर बेचते हैं. सो दैट्स अबाउट द बिजनेस. Very traditional, old sort of a business, but what they have been doing as a value up over the other traditional players, जो other traditionals में big space players देखोगे, वो है नवनीत हो गया, एस चंद हो गया, जो हमने किताबें पढ़ रखी हैं. So all of them, Chetna is also one of those players. उनके मुकाबले इसका एज क्या है, what the company has been trying to do is, उसने ना एक एलन एंटरप्राइजेस करके एक एडटेक कंपनी उसके साथ टाई अप किया है, और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने QR कोड्स डालते हैं बुक्स में, जिसके थ्रू वो तुम QR कोड स्कैन करोगे तो जो क्वेश्चन है उसका वीडियो फॉर्मेट तुम जाके देख सकते हो और उसको वीडियो के थ्रू समझ सकते हो. सो इनके पास अराउंड 30,000 वीडियोस है लाइक दैट. 700 किताबें हैं इनके पास, 700 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइटल्स हैं, और 15 डिफरेंट ब्रांड है कंपनी के पास जो इनने ट्रेडमार्क करा रखे हैं. सो ये ब्रांड कैसे होते हैं, जैसे मास्टर की, सेल्फ स्टडी, ग्रेड मी, QR बुक, 9 हैच, ऐसे करके इन्होंने अपने ट्रेडमार्क बना रखे हैं. इन ब्रांड्स के अंदर ये कंपनी अपनी किताबें लाती है, और ये प्री नर्सरी से लेके क्लास 12 तक सब प्रकार की बुक्स लाती है. सो वेरी ट्रेडिशनल बिजनेस. एंड ऑफ द डे, लाइक आई डिडंट फील देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज
advantage of the QR codes as well, but that is what the company has been doing. In terms of अगर मैं देखूं कंपनी जो पेमेंट ला रही है, so around कंपनी 46 CR रेस करने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने बोला अराउंड 172 PR पे 172 CR पे. लास्ट ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अराउंड 12 करोड़ था, तो उस हिसाब से 13 PE पे आ रही है. अगर मैं 12 करोड़ को देखूं तो जो कंपैरेबल है एस चंद और नवनीत वो कंपैरेटिवली काफी बड़े हैं, मतलब सो आई शुडंट से दे आर कंपैरेबल, बट अगर इवन एप्पल्स टू एप्पल्स ना देखूं, जो ये पब्लिशर है ये 16 PE 18 PE पे चलते हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा अंटिल यू वैल्यू दैट एडटेक बिजनेस की. वो जो एडटेक वैल्यू बिजनेस है उसकी वजह से एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स बिकमिंग इंटरेस्टिंग. बट अगर सिर्फ इसको एज अ ट्रेडिशनल सप्लाई ट्रेडिशनल बिजनेस देखोगे तो शुड प्रोबेबली लिस्ट अराउंड समवेयर द सेम नंबर, और एटलीस्ट जब लिस्टिंग फ्रेंजी हट जाएगा तो उसके बाद इट शुड कम बैक टू दैट नंबर इटसेल्फ. उसके अलावा मेरे को जो कंपनी का थोड़ा सा इशू लगा वो ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के बहुत ज्यादा है. कंपनी मेनली ट्रेड रिसीवेबल को ही कम करने के लिए लोन ला रही है, आईपीओ ला रही है. सो कंपनी के पास अराउंड 52 CR का ट्रेड रिसीवेबल है, पूरी बैलेंस शीट ही 94 CR की है. सो 92 CR में से 52 करोड़ तो इनके पास खड़ा है जो इनको माल आना है. ऑल्दो कंपनी इज सेइंग इट इज अनडिस्प्यूटेड, बट इन इटसेल्फ इज अ बिग अमाउंट. सो इट काइंड ऑफ रेजेस सम वेरी स्मॉल क्वेश्चंस ऑन हाउ जेन्युइन इज द trade receivable of the company, although it seems nothing stands out कि बहुत पुराना लोन पड़ा हुआ है या 3-4 साल से trade receivable नहीं हुआ है, but it's just that the trade receivable forms a big portion of the balance sheet, so that's something which needs to be seen in a lot more detail. That was what I had thought about the company. One good thing about the company, जो lead manager है वो M Securities है. M Securities IPO usually ऐसा कहा जाता है कि their underwriting is good. They kind of understand the business and then discover the business as well. So that's one good part about the business. But that is what my read about Chetna Education was. I'm not super excited about this issue unless we come to know more. बहुत ज़्यादा मुझे कंपनी के बारे में वीडियो या प्रमोटर क्वालिटी वगैरह के बारे में मुझे मिला नहीं इंटरनेट पे. So I have limited visibility into what the company has been doing and what the company has done. So I can only speak basis that. But that's what my read of Chetna Education is. I don't think तन्मय और रोहित आपने वो ये कंपनी पढ़ी है अभी तक, राइट? No, I lied some. मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं यार, बट ना मैंने थोड़े इंटरनल देखी इसके. मतलब ना ऐसा लग रहा है कि ना मतलब कुछ चीजें ऐसी ओवर दिखाई गई है, मतलब मुझे वो कंफर्ट नहीं आ रहा है. बैलेंस शीट में बहुत चीजें मतलब ऐसी क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ चीजें, एंड यू सी ये नेटवर्थ इनका मतलब उधर के उधर है, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, डेट बोरोइंग देखो यार 51 करोड़. और सीइंग द साइज ऑफ द कंपनी 51 करोड़ क्या 30 करोड़ भी ज्यादा होता है. तो मतलब ना कंफर्ट नहीं आ रहा है ना. आई फील इसका जो रियल वैल्यू बनता है ना इशू प्राइस से 20% नीचे बनता है, तो मतलब लिव इट यार, अवॉइड. That's a lot more open review than what I would have said, but मैं भी शायद थोड़ा बहुत उसी साइड में हिंट कर रहा था. So thank you for being a lot more. यार क्या बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो क्यों मतलब जहाँ पे थोड़ा डाउट कंसर्न है वहां पे जाना. बेटर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो छोड़ दो यार, अच्छे है, बड़े SME है. VVIP is very good. Very true, Tanmay. Thank you so much. So that was about Chetna Education. Maybe we'll now go to Mangalam. Rohit, do you want to go ahead and talk about Mangalam? Yes, let me wrap this up with Mangalam. Another infra play, but a little different from what we are seeing. Basically, these guys are a consultancy business, so they don't actually do any of the on-ground execution of any of the projects. They simply do some of the planning, some of the supervision, some of the O&M. They help set up the project reports. What are the feasibility studies, the costing, all of that. So that is the sort of work that these guys do. They have mentioned in the RHP that they want to get into the EPC business as well, though I'm not too sure why. I think what they have is actually a pretty good, nice, well-run operation with good clients, a good mix of projects, and decent financials as well. They are coming, I think, with an order book of about 80 crore, which also shows that, and they're currently a 40 crore business. So it shows that there is some visibility to future revenue as well, and very, very strong margins. This, again, like any consulting business, you would expect it to have 15 to 20% PAT, which is what these guys also have. In general,
now my only, again, there is no real promoter read here. There is no interview. All of those hopefully will come in the next few days, and that can change our view. But I found that just the way they projected the business growth, how they're talking about how they want to take this business over the next few years, at least from the RHP, I didn't see any aggression. It looked like they want to kind of grow this business at 20% year on year. Margins cannot really expand a lot beyond this because they're already at very, very healthy margins. This sector, I mean, there are not a lot of peers, but you could say that a consulting kind of business in a very, very hot sector can get about 30p. And in an infra, there are one or two peers which sit at around 20p. While this guy is coming at, I think, 14, 15p. So there's probably 30, 35%. It's a nice business, nice asset-light business. There is revenue visibility. So it feels like this can, give a bit of a listing pop and should do well in the, I'd say, medium term as well. But at least when I go after SME companies personally, I try to find those that show very, very strong signs of growth and margin expansion. And I feel that neither of those two things will happen here. And unless there is a PE re-rating, this will kind of grow with the size of the, with the actual business as it performs. So yeah, in my view, it's a good issue. It's worth applying because there's a little bit on the table. But for the long term, I really need to see a lot more information and a lot more of a vision from the management that is different from what is being presented in the RHP. So I'm not that bullish for the long term in terms of a rapid growth, rapid scale kind of business, but a good sort of steady business that I don't think will do badly just because of the sheer, the quality of the P&L that such a business has. Perfect. Thank you, Rohit, for covering that. I also had a very similar read for, say, it's a 27 CR issue. Companies trying to raise 27 CR. Most of it for working capital. So it seems just one thing, the company in itself is not infra play company, is as a consultant to infrastructure companies. It helps companies understand how work is being done. उसके project reports बनाती है, supervise करती है, quality control देखती है, and basically operations and maintenance में help करती है with respect to infra plays. So it essentially is a very asset light model, and once in, it should continue to operate at a very healthy margins, but it will only grow at so much क्योंकि it's like कि अगर ये बहुत ज्यादा margins होंगे तो replace हो जाएगी with someone else. Company around 6 CR पैड करती है जिसमें से 15 के PE पे आ रही है 98 crore market cap पे. So it seems that there is some growth room. But having said that, एक चीज which I again kind of talk about, I'd like to look at the balance sheet. Company का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो लास्ट ईयर में 7 CR से 16 CR हो गया है. सो इट सीम्स दैट द सेम काइंड ऑफ प्ले व्हिच इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग इन एनी वे, बट शुड बी स्टडीड इन डिटेल. इसकी कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 7 से 16 करोड़ क्यों हो गया एक साल में? वेयर इज द अमाउंट स्टक एंड हाउ वुड दैट बी रिकवर्ड? सो दैट्स समथिंग व्हिच विल नीड टू बी स्टडीड. बट अगेन आई एम आल्सो होपिंग कि इस कंपनी के बारे में और डिटेल आएगी, और जैसे जैसे और डिटेल आती है दैट्स व्हेन वी विल काइंड ऑफ नो मोर अबाउट द कंपनी. So that's on the receivables point I just mentioned, see, this is not uncommon, especially when clients are government. So if you look at most of these consulting players now, they will get their money the end of the project only. So they will have a decent, 3 to 4 months of receivables always. So on a 40 crore base, 16 crore is expected, especially given that their mix of government is going up. So probably one of the best things that I do when I look at receivables is, first thing is to just check receivables of as near peers as you can, and if the receivables are in line. And the second is to check what is the percentage of government business, because government mein to hota hi hai, and that's it's just part of working with the government. You will have maybe 90 days to 150 days kind of receivables, which is just par for the course. So as long as that is the case, then I would tend to feel that the company is not doing anything incorrect to sort of show a bloated number before the IPO. That's just my personal view. Got it. रोहित, मेरे को आपको हिंदी में कुछ बोलते हुए सुनाई देगा, so that's a plus per se. But yeah, thank you for covering your views. Definitely very interesting. You should kind of look at जो कंपनी का trade receivable है, is it in line with the market, where the market other peers trade receivable is it, and if for a B2G company ideally trade receivables
थोड़े से ज्यादा होंगे compared to your private players. So that kind of covers our read of Mangalam as well. Just one point, we have kind of covered everything. So I have a few comments जहाँ पे लोगों ने बोला है कि you guys can repeat a bit, but what we'll do is the space is recorded. तो जब ये space खत्म हो जाएगा तो आप वापस से जाके सुन सकते हो. We'll put recording of this on our YouTube channel as well, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हो. So in the interest of time, we are not repeating any of the issues, but if you want to, you can go ahead and listen to these issues as well. So that's our read of the IPOs, open all main board as well as SMEs. In the interest of time, when very quickly मैंने एक और topic बोला था कि we'll cover what buybacks are and how can they offer an opportunity. मैं उसके बारे में 2-3 मिनट बात करूंगा very quickly, and then maybe we'll take any questions because वो भी एक comment आया था, if we can take a few questions. So if you have questions, please put them on chat. We'll talk about them as well. But having said that, before that, I want to kind of mention what buybacks are and how buybacks kind of work. So company क्या करती है? Buyback basically is a mechanism of company to buy back its own shares and essentially reduce the floating share क्वांटिटी इन द मार्केट्स. सो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स खत्म कर देती है ओवर टाइम. व्हाई कंपनीज डू बायबैक इज कि उससे क्या होता है, कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर, वो इंक्रीज हो जाता है. एंड कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश है, लेट्स से कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश है तो वो क्या कर सकती है, या तो किसी तरीके से डाइवर्सिफाई किसी प्रोजेक्ट में डाल सकती है, बट लेट्स से दे डू नॉट हैव अ अपॉर्चुनिटी पर से, और दे फील दैट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर, हमारी कंपनी की जो वैल्यू है वो मार्केट ने अंडर वैल्यू कर रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने शेयर वापस से खरीद लेंगे और शेयर क्वांटिटी कंपनी की कम कर देंगे. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. बायबैक्स दो प्रकार के होते हैं मेजरली. इट्स ईदर अ टेंडर ऑफर और ओपन प्राइस ओपन मार्केट बायबैक. ओपन मार्केट बायबैक में क्या होता है, कंपनी मार्केट से खरीदती है, उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि हम इस प्राइस तक खरीदेंगे. सो ओपन प्राइस बायबैक्स में कंपैरेटिवली इतना एडवांटेज नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि कंपनी मार्केट से प्राइस खरीद रही है. जो दूसरा तरीका होता है वो टेंडर ऑफर होता है. टेंडर ऑफर में बेसिकली क्या होता है कि कंपनी टेंडर करती है कि हमें इतने शेयर चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, तो हम इस प्राइस पे इस डेट पे करेंगे. फिर लोग जो हैं वो जाके अप्लाई करते हैं और उसमें उनके जो शेयर हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं. सो टेंडर ऑफर एट टाइम्स रियली gives you good opportunity to try and make some money. I know Rohit here had me and Rohit both of us had participated big in Bajaj two-wheeler company का जब अभी recently बायबैक आया था बजाज ऑटो का, तो तब जब उनने बायबैक अनाउंस किया था तब कंपनी का शेयर 7,000 रुपए का था. वो खुद का ही शेयर 10,000 रुपए में खरीद रहे थे because they thought that the company is undervalued. So there was excellent opportunity in the short term in order to make some extra cash. इसमें दो चीजें अपने को ध्यान रखनी होती है जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रिटेलर्स के लिए एक एक्स्ट्रा कोटा होता है, जिसमें रिटेल इज एसेंशियली कंसिडर्ड एज एनीथिंग जो भी डीमैट लेवल पे, जिसके पास पैन लेवल पे 2 लाख रुपए से कम का शेयर है, दैट्स अ रिटेलर फॉर अ बायबैक. तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए से कम का शेयर है तो कंपनी आपका शेयर के लिए एक अलग कोटा रखती है. सो बेसिकली 15% ऑफ द बायबैक जो कंपनी कर रही है वो अलाउड होता है, वो प्रोविजन होता है कि उसमें से सिर्फ रिटेलर्स ही यूज करेंगे. तो इसलिए क्या होता है, रिटेलर्स के लिए ना थोड़ा ज्यादा उनका शेयर निकल जाता है जब वो बायबैक में डालते हैं. तो दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच यू नीड टू लुक एट इज ER एंड AR. ER जो होता है वो एंटाइटलमेंट रेशियो होता है कि कंपनी कितना शेयर तुमसे खरीदेगी. फिर क्या है, हर आदमी बायबैक में नहीं डालेगा, तो एक AR आता है जिसको एक्सेप्टेंस रेशियो बोलते हैं कि कंपनी ने एक्चुअली एंड ऑफ द डे कितने शेयर बायबैक किए. सो यूजुअली क्या होता है, फॉर गुड और कई बार प्रमोटर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रमोटर नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सो उसके भी डिफरेंट रीजंस होते हैं. जैसे अभी शारदा मोटर्स आया था तो उसमें उनकी अराउंड 73% होल्डिंग थी जिसको उनको बढ़ाना था, तो इसलिए प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया. तो उस केस में भी क्या है कि ज्यादा शेयर्स कंपैरेटिवली मार्केट से निकल जाते हैं. जैसे शारदा मोटर्स में जब हमने बायबैक में पार्टिसिपेट किया था तब शेयर प्राइस अराउंड 1450 का चल रहा था, एंड कंपनी जो है वो विद इन अ वीक बायबैक ले रही थी अपने शेयर 1800 रुपए में. तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी. बट एक चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि क्या है कि जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो 100% नहीं आएगा. सो डेफिनेटली लुक अहेड एट द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो आ रही हैं, उस हिसाब से अप्लाई करना कि
एंड ऑफ द डे कुछ शेयर्स आपके पास बचेंगे भी। जैसे शारदा में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस दिन कंपनी का लास्ट बायबैक की डेट थी उसी दिन शेयर प्राइस 1800 से भी ऊपर भाग गया था, लाइक 1850 का था, फिर भी पूरे शेयर नहीं एक्सेप्ट हुआ। अगर आप उस हिसाब से सोचो तो किसी को बायबैक में डालना ही नहीं चाहिए अमाउंट, क्योंकि 1800 का शेयर 1850 में, 1850 का ओपन प्राइस है तो 1800 में क्यों डालूं, फिर भी अराउंड उसका AR 60% आया था। So it's a good opportunity to try, like usually buybacks are good signs that the company and if you these are short term plays. Usually what happens is अगर company अपने share buyback कर रही है तो it's a sign कि उसके पास it feels that the company is undervalued. So all those companies can be given an extra brownie point कि इसका share price हो सकता है comparatively better करे, because the the management group has like fundamentally believes in the share, that's why it is buying back. One very important thing again which I want to cover and close this after that is that buybacks जो है बहुत tax efficient होते हैं। like अपन जब शेयर बेचते हैं कोई भी नॉर्मल मार्केट में तो हमें 10% LTCG देना पड़ता है, 15% STCG देना पड़ता है, पर बायबैक में क्या होता है कंपनी ऑलरेडी वो भरती है तो हमें उसका टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। सो इट्स अ गुड वे कि अगर आपके पास कोई कंपनी आ रही है जो ऑलरेडी आप शेयर होल्ड करते हैं तो उसका बायबैक में निकाल के फिर से खरीद लो। दैट्स ऑल्सो वे टू काइंड ऑफ मैनेज योर टैक्सेस एज वेल, क्योंकि उससे क्या है आपका अमाउंट फ्री होता रहता है। दिस इज इन एडिशन टू द 1 लाख LTCG जो आप देते हैं। सो दैट्स द व्यू ऑन द बायबैक साइड per se. That's what we had in terms of the call for today. Rohit and Tanmay, do you have anything to add on buybacks from your side? And I have added Sandeep as well. Maybe Rohit, you can go, and then Sandeep, if you have something to add. Yeah, very small thing on buyback. I think just the bit that you were talking about retail, that retail component is 2 lakhs. On the date of holding, if it is more than 2, if it's 2.01 lakh also, you will go into the other category. So be very, very careful. Give yourselves enough buffer if you are applying, say, for multiple accounts and you want to get into retail. If the price of a share, let's take Sharda Motors, it was around 1450. On the day of the buyback, the final day of the buyback, the price had gone to 1600. So if you had bought, say, 120 shares or 125 shares, thinking that sum is 1.7, 1.8 lakhs, by the time the buyback comes, if that share value goes above that threshold, you'll move into the larger category where the is extremely low, where there is no, it doesn't make sense to do a buyback. Generally the buyback only makes sense in retail, so it makes sense to do it up to that 2 lakh threshold for some as many accounts as possible. It's a learning that actually worked very well for me, because it happened to me with Sharda Motors, where it went over that threshold. I didn't do the buyback and I'm continuing to hold the shares, and shares have doubled since then. That was pure luck, but generally it's a mistake which can otherwise just hurt all your calculations. I remember Rohit, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 330 पे की प्राइस कितने पे क्लोज होगा, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज कि एक शेयर ऊपर नीचे की वजह से आपका कैटेगरी अबाउट 2 लाख चला गया था। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी। अभी गोदावरी पावर का आया था जब तो मैंने शुरुआत में 1.9 लाख का लेके छोड़ दिया था कि देखता हूँ ईयर क्या आएगा, बट फिर वो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होकर 2.05 हो गया, तो इसलिए मेरे को उनने इंस्टीट्यूशनल वाली कैटेगरी में डाल दिया, और उसमें जो एंटाइटलमेंट होता है वो ही बहुत कम होता है। सो दैट्स वन थिंग विच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। अगेन मैंने बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं, बट इट्स अ गुड वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनीज आर डूइंग। मे बी संदीप, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन बायबैक्स और जनरली? First of all, always good to hear you guys talking. पहले वाले को तो अटेंड भी किया था, लास्ट वाला मिस हुआ था, and this time looks like you guys have changed the timing. So anyway, I probably missed it. Not that I want to read all DRHP, but it is always good to hear in 3 minutes, 5 minutes voice notes, and at least you get to know about different companies. स्पेसिफिकली मैंने स्पीकर पे इसलिए आया था कि 1-2 छोटे से पॉइंट्स करेक्ट भी करना चाहता था और एक एडेड पर्सपेक्टिव देना चाहता था बायबैक में। तो अभी आपने बोला था वो एक थोड़ा सा, आई थिंक यू जस्ट मिस स्टेटेड दैट। नेचुरली अगर आप शेयर्स बेच रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसा कोई नहीं है। आप अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपने खरीदे हैं, जब भी खरीदे हैं बायबैक अनाउंसमेंट के बाद खरीदे हैं, तो नेचुरली एसटीटी में आ जाएगा, पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं तो वो एलटीसीजी में आ जाएगा, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको अगर मनीष एक बार प्रमोटर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा।
प्रमोटर के पास एक्स्ट्रा कैश लौटाने के दो ही तरीके हैं, डिविडेंड या बायबैक, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपेंसेस और वो सब है। तो कंपनीज, जिस भी बिजनेसमैन को पैसों की जरूरत नहीं है, प्राइमरली एसेट लाइट बिजनेसेस एटसेट्रा, दे वांट टू गिव बैक मनी, राइट, टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, टू सेल्फ ऑल्सो। उसको करने के लिए जब डिविडेंड क्या है कि आप साल में 4, इनफैक्ट साल में आप 10 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज एक बार करती हैं फाइनल, कुछ कंपनियां 2 बार करती हैं, कुछ कंपनियां वंस इन अ वाइल स्पेशल डिविडेंड करती हैं कि बहुत सारा एक्युमुलेशन हो गया है, पहले उनको लगा था कि प्रोजेक्ट करेंगे, फिर नहीं हुआ तो वन टाइम उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब डिविडेंड में क्या होता है कि आज से 3-4 साल पहले तक डिविडेंड टैक्स फ्री था, क्योंकि ये होता था कि कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद ही डिविडेंड आ रहा है। तब तो लाइफ बहुत इजी थी, हर कंपनी ब्लाइंडली डिविडेंड देती रहती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने वो रूल चेंज कर दिया, डिविडेंड भी टैक्सेशन हो गया। इनफैक्ट टैक्सेशन बिल्कुल आपकी एज एन इनकम माना जाएगा। तो अब प्रमोटर टिपिकली बीइंग रिच पीपल, अगर वो डिविडेंड लेंगे तो वो टॉप एंड पे बैठते हैं, तो 40% के आसपास उनकी टैक्स रेट पड़ती है। दैट वर्सेस जो आर्बिट्राज है उनका, वो एसेंशियली ये है कि बाईबैक में 23% कंपनी को अपफ्रंट देना पड़ता है। लेट्स से वो 100 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं तो उनको 23 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज अ कंपनी लायबिलिटी, दैट हैज नथिंग टू डू विद द हु इज द बायर, हु इज द सेलर, राइट। फिर उसके बाद एज्यूमिंग के इक्वल प्रोपोर्शन में कंपनी ने बाई कर लिया, तो प्रमोटर का जो इंक्रीमेंटल एलटीसीजी टैक्स है वो 11-12% पड़ेगा, एज्यूमिंग ही इज होल्डिंग लॉन्ग टर्म शेयर्स। तो नेट उसको 32, 33, 34% के आसपास उसकी लैंडिंग पड़ेगी प्रमोटर की। सो दैट 6% बेसिकली इज ट्रिगरिंग लॉट ऑफ दीज बाईबैक्स। प्राइमरली जैसे ही बायबैक डिविडेंड टैक्स जैसे ही बढ़ा था, आप नोटिस करिएगा कि पिछले 4 साल से ही इन्फोसिस टीसीएस के बायबैक से स्टार्ट हुए। तो इट्स एसेंशियली टैक्स आर्बिट्राज जो कि गवर्नमेंट प्लग आउट करेगी। बायबैक इज मच टफर टू एग्जीक्यूट कंपेयर टू डिविडेंड। उनमें कुछ नहीं करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुआ, एक स्पेशल अकाउंट बनाया, एस्क्रो में डाला, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। बायबैक की भी एक लिमिटेशन है, मोस्ट लाइकली साल में 1 बार ही कर सकते हैं या 2 बार है, मोस्ट लाइकली 1 बार ही कर सकते हैं साल में 1 बार। तो अचानक से आपको 6 महीने बाद कुछ कैश आ गया और आपको लग रहा है कि मुझे एज ए प्रमोटर, एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर डालना है, तो आप नहीं कर पाओगे, तो साल में 1 बार ही हो सकता है। मोस्ट कंपनी, बड़ी कंपनियां इसको डुअल तरीके से यूज कर रही हैं, बायबैक भी कर रही हैं, डिविडेंड भी कर रही हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो मतलब बेसिकली दे उनके टिक बॉक्स में रहता है कि कंपनी डिविडेंड पेइंग है तो चेकलिस्ट में पड़ा रहता है, राइट। तो बहुत सारी कंपनियां वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहती हैं और बहुत सारे शेयर होल्डर्स उतना मैथमेटिक्स में नहीं जाते हैं, बोलते हैं बायबैक में तो मैंने कुछ किया नहीं, मुझे डिविडेंड भी नहीं मिला। सो नॉट एवरीवन इज थिंकिंग मैथमेटिकल टर्म्स, लॉट ऑफ पीपल इज टेकिंग इट इन सेंटिमेंटल टर्म्स आल्सो कि कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी नहीं देती है। इट रियली डजंट मैटर कि वो डिविडेंड से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। द होल डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी जो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम द अदर साइड। जो मनीष आप बोल रहे थे दैट वाज ओनली फ्रॉम ए वेरी नैरो पर्सपेक्टिव एंड व्हिच इज ऑब्वियसली हेल्पफुल। स्टेटस स्पेस में इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर तो बैठे नहीं है, इज बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा कोटा। तो सेबी हमेशा ऐसे रिटेल प्रोटेक्शन के नाम पे चीजें लाती हैं कि कई बार रिटेल के लिए बेनिफिट के सौदे हो जाते हैं। दिस इज वन सच एग्जांपल जिसमें कई ऐसे केसेस स्पेशली टीसीएस वगैरह के हुए हैं जहां पे रिटेल का जो प्रोपोर्शन है वो इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई था कि वो आर्बिट्राज बन गया कि जैसे अनाउंस हुआ 3200-3400 रुपए में आपने ले लिया, 4000 में बेच दिया, कुछ नहीं करना है, आपको फ्लैट 12-15% 3 महीने में बन गए, विच इज अ रिस्क फ्री आर्बिट्राज। 15% इज नॉट अ बिग नंबर इन नॉर्मल सेंस, बट इट इज अ बिग नंबर इफ इट इज रिस्क फ्री, राइट। कंपनी ने कमिट किया है, टीसीएस जैसी कंपनी, बजाज जैसी कंपनी बैकआउट तो करेगी नहीं, राइट। दूसरा ये करती हैं कंपनियां, सिग्नलिंग भी करती हैं, जो आप लोग बोल रहे हो कि कंपनी ये सोचती है कि या तो वो ये सोचती है कि कंपनी जेन्युइनली अंडरवैल्यूड है, या फिर कई बार वो स्पेशली डब्ल्यूएस कंपनीज, ऑब्वियसली नॉट टीसीएस एंड बजाज, बट डब्ल्यूएस प्रमोटर्स विल आल्सो डू अ स्मॉल बायबैक जस्ट फॉर द सिग्नलिंग। इनफैक्ट इसके पास्ट में बहुत सारे मिसयूज भी हुए थे जिसके बाद रेगुलेटरी टाइटनिंग भी हुई थी। तो क्या करते थे, अनाउंस कर देते थे ओपन मार्केट, लेट से प्राइस चल रही है 800 रुपए की, आपने अनाउंस कर दिया कि हम 900 में करेंगे, उसके बाद स्टॉक किसी वजह से भाग गया तो ऑब्वियसली बाय भी नहीं किया और आपकी सिग्नलिंग भी हो गई, तो पैसे भी नहीं लगे। तो उस तरीके की चीजों को होल्ड करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स किए, मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है, बट एक आपको जस्ट एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज समवन इज बाइंग, तो यूजुअली मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ऑब्वियसली वो कंपनी आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, आप स्ट्रेट अवे बायबैक, आर्बिट्राज वाला एक अलग है मनीष, वो तो आप एनीबडी कैन मेक आउट, मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ में दिलीप देवड़ा वगैरह भी लिखते हैं। कीपिंग दैट असाइड, एज आई थिंक रोहित वाज सेइंग,
essential point should be, is company good for me? And then buyback is an additional trigger for it. And unless buyback is at least 2-3% of market cap, right? 0.1%, 0.2% का अनाउंसमेंट, वो सिग्नलिंग ज्यादा है, उसकी मेटेरियलिटी या उसकी मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, एक तो ये चीज मैंने इसमें बोलना चाहता था. और एक साइड दूसरा ऐड करना चाहता हूँ कि दे जस्ट नॉट नेसेसरली ओनली यूज इट फॉर कैश इन यूएस कॉन्टेक्स्ट, जिसका शायद आप बोलोगे कि यहाँ क्या रिलेवेंस है, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर कर रहा हूँ. यूएस में क्या होता है कि जितनी टेक्नोलॉजीज कंपनी है वो रेगुलर ईसॉप्स देती हैं, तो उनका कंटिन्यूसली डाइल्यूशन होता रहता है. उसको ऑलमोस्ट सेम चीज को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि कैश जनरेटिंग भी है सारी ये जो फैंग कंपनीज हैं, राइट, तो उतना ही लगभग अमाउंट वो वापस बायबैक कर लेती हैं, जिससे कि वो फंड मैनेजर्स को बोलती है कि हमारा नेट शेयर काउंट रफली सेम है. सो दैट इज एन एडिशनल इंटेंट. और तीसरा है फाइनेंशियल लेवरेज. For example, Maruti. My first job was Maruti. They never had a debt. An automobile company not having debt is unthinkable. But they being Japanese and India entity थी, initially they never had debts. I mean, I'm not talking about right now. I'm talking about 15 years back, 20 years back. Similarly, Apple जैसी कंपनी को कोई डेट की कोई लॉजिक ही नहीं है. क्यों चाहिए डेट? इतना तो कैश जनरेट कर रहे हैं, कैश पाइल पे बैठे हुए हैं. So this entire Warren Buffett play was nothing but buyback play. So once he entered, बेसिकली कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज मोड में गई, क्योंकि कंपनी को ये समझ में आ गया कि एप्पल की ब्रांडिंग इतनी तगड़ी है कि उनको 1% पे लोन मिल सकता है, 0.1% पे लोन मिल सकता है. इनफैक्ट दे डिड 20-30 ईयर काइंड ऑफ अ डेट ऑन 0.1%. तो जब इतना सिस्टम आपको लोन दे रहा है तो उतना आपने लोन लिया, एग्जिस्टिंग कैश प्लस ये करके कंटिन्यूसली बायबैक किया है एप्पल ने. तो अगर आप देखोगे तो उसकी ईपीएस ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी स्टॉक की ग्रोथ है. इनफैक्ट कल कोई मुझसे ट्विटर के थ्रेड्स में डिस्कशन ही चल रहा था बायबैक एंड डिविडेंड. हम अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली मैक्रो कैप में, वहां तो डिविडेंड और बायबैक की बात ही करना मतलब मूर्खता है. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट डिविडेंड एंड बायबैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेइंग दैट कंपनी इज वर्किंग. मतलब वो तो बोलते हैं ना, पेनिसिया है, मतलब बिल्कुल पिनेकल ऑफ एनीथिंग, राइट, एक्सेप्ट फॉर अर्ली ग्रोथ स्टेजेस जहां पे बहुत कैपेक्स बिल्डिंग हो रही है. बट एक कंपनी जो डिविडेंड और बायबैक कर रही है, उसको ये सोचना कि अरे कैसी कंपनी है, इनके पास तो खर्चा करने के तरीके भी नहीं है, लौटा रही है. आई हैव हर्ड दोस काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स आल्सो. ऑब्वियसली दे आर सीइंग मार्केट फ्रॉम अ वेरी नैरो व्यू ऑफ certain time frame and certain style of companies. So this is all I wanted to add, Manish. Over back to you. Thank you, Sandeep. From my limited understanding, I can recheck on this as well, but from my limited understanding, जो buybacks की इनकम होती है वो मेरे लेवल पे टैक्स नहीं होती है, वो सेक्शन 1034A में आती है, हमने इस बार भरी है. तो वो उसमें ना कैपिटल गेन्स पे एग्जेम्प्ट मिलता है, बट आई कैन कम बैक टू यू आफ्टर चेकिंग ऑन दिस. Sorry to jump here. This is Deepak here. Can I speak just on that point? Sure. So I am invested in a company which does buyback every year. And so there are two options to do buyback. One is tender offer and one is market buyback. If the company does a tender offer, then whatever shares you tender, it's completely tax-free because the onus is on the company to pay the tax. If the company does a market buyback, and your share gets acquired, then you have to pay full tax in a normal way. So that's one point on the tax perspective. The other part which you need to think while tendering or exploring a buyback is the promoter also tendering his shares in the buyback? Because the company which I'm invested in, the promoter never tenders, and by doing that, he's slowly using the company's money to increase his stake. Because when the buyback happens, to that extent the shares gets extinguished, and since the promoter is not offering his shares, his stake is slowly going up. So that's a very important point to keep in mind as to what's promoter thinking for the next 5-10 years. So Deepak, just on that, so in fact glad that you highlighted, now I understand why Manish is saying that. So but think like this, when a proposal is on company's dashboard, right, dividend, buyback, via tender offer, via open offer, there is a total outgo which is logged, right? That much money is taken out of company in one form or another form, right? So whether company pays or I pay, net my remaining stock is still same. So I'm saying, I mean, there is no way government will say you won't pay. I mean, if company is paying on your behalf, obviously that is getting adjusted in the
price of the remaining of the stock. So, but anyway, glad that you highlighted. Second thing is what you are saying is obviously a fantastic point. That's a strong signaling that promoter is using buybacks to increase his stake without doing market disruption. That obviously is super positive. Having said that, reverse is not necessarily, at least in my view, bad. If promoter is simply also doing the same amount, right, in proportion, then it is okay. Why? Because it is essentially a dividend replacement with a slightly better tax optics, tax outgo. Any day. Completely agree. I mean, what you are saying is obviously super positive from a stock perspective. But not if promoter is participating, it need not necessarily be seen as a negative thing, because he also has a valid, demand or life goals to have dividends in hand. And if he thinks buyback is a more tax efficient way, in fact, small shareholders want dividend and large shareholders want buyback. So because we are involved into discussions, and that is purely because of tax bracket angle. So just on that point, many FIIs don't like buyback because as per their mandate or their fund mandate, they can't tender in a buyback. So they prefer dividends. So it's a mix and match. These are very good points. मैंने अपने नैरो तरीके से समझाई थी as a retailer. What we at least tend to do, as Sandeep, you were mentioning that we try and utilize the arbitrage opportunity on the buyback side. But what I have also seen is in that case, I've kind of missed holding on to companies for longer periods. So that's definitely there. But thank you so much for your views. And regarding tax arbitrage, I'll tell you, there's a bearings company, SME bearings company, not taking the name, but उसकी board meeting में उन्होंने dividend दिया था. तो it was asked from the person, from the promoter, ki, can you do buybacks instead of dividends? But it's so tricky to explain to the person that the promoter kept saying that dividend is a way to give away money. But it's just that वो थोड़ा nuances ना taxes के समझाने में थोड़ा समय लग जाता है. So that was one very peculiar example which I remember from the dividend versus the buyback example, especially on the SME side, because उसमें comparatively कम देखने को मिलता है हमें वो. So it's ease also, right? Dividend is super easy, right? Sometimes promoters are so busy that they say 5-6%, I'm not getting into all this, it's fine, right? If amount is small. So ultimately, I mean, we as an investor want to, analyze everything to the last point, 10 bips. I know enough promoters who take so-called suboptimal decisions purely because they are always focused on bigger pictures. I mean, for that matter, as Deepak ji probably rightly pointed, I was missing this angle, that for a lot of institutional investors, for some investor, dividend makes more sense, right? So naturally, both sides will do certain pressure, and that's why the companies like TCS and Buyback are doing combination, not just one way to distribute cash, because they want to keep all kind of investors in good splits. Even if it is for promoters, it may be logical to probably do buyback than dividend kind of a thing. So I mean, companies do take care of everyone's interest also. Perfect. Thank you so much, Sandeep and Deepak, for sharing your views. Very helpful. With that, we'll kind of close today's space. Unless anyone has anything to add or any questions, please feel free to kind of raise your hand or come in as a speaker. Just one fair warning: we would not be taking any specific share prices already listed, because again, that's conflicting with the theme of the show. But if you have any questions with respect to the open issues that are going on, we can kind of take some of those questions. Yeah, I have added a few people if someone can ask their question. Yes. Actually, I wanted to know what is the better way to apply in SME IPO? Should one apply for say 80 lot, 90 lots, or can I divide it in my different PAN numbers? If I'm having 7 to 10 accounts, so can I divide? So what will be the better chances?
Again, there's a separate space on this जो हमने किया हुआ है, but I'll kind of quickly do this and then maybe we'll wrap up after this. But SMEs में क्या होता है, proportionate basis पे allotment होता है. तो अगर आप 10 लाख डालो तो और 100 CR डालो, जैसे जैसे आप ज्यादा डालोगे वैसे वैसे आपके chances बढ़ते जाएंगे. Versus a main board जहाँ पे lottery basis होता है. So that's the difference per se. But having said that, SME में what you need to keep in mind is at times अगर आपका 50% हो जाए सब्सक्रिप्शन से ज्यादा तो आपको एक लॉट मिल जाता है गारंटी. सो दैट वन स्मॉल आर्बिट्राज जो आप प्ले कर सकते हो कि अगर लेट्स से कंपनी 100x सब्सक्राइब्ड है तो अगर आप एक अकाउंट से 51 लॉट भी डाल देते हो तो अनलेस कोई और अप्लाई ना करे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको वो लॉट मिलेगा. सो इन दैट केसेस अगर आपको बड़ा अमाउंट डालना है तो देखना पड़ेगा. बट अगेन इट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू actively do and which needs a lot of effort, but at a very high level prima facie it is irrelevant whether you put 80 lakhs from one account or 10 lakhs from 8 accounts, especially considering कि आपका एप्लीकेशन आजकल के दिन में जब इतना एप्लीकेशन जाता है तो it will go into a lottery basis. अच्छा, and second one thing I also wanted to know, जैसा अभी आप लोग ने बाईबैक की ये बात किया तो इसमें अभी जैसे ऑरबिंदो फार्मा का एक बाईबैक का भी न्यूज आ रहा है, तो ऑरबिंदो फार्मा में भी कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? Again, that's something which you will have to study on a individual basis. आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का करंट मार्केट शेयर क्या है और कंपनी कितने का बायबैक कर रही है. तो आप देखोगे अराउंड कंपनी 51 लाख शेयर्स बायबैक कर रही है. उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि करंटली कितना है. बट आप देखोगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी का है और जो बायबैक प्राइस है उसके बीच में बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं है. और जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि डज इट मेक सेंस और नॉट. आई एम नॉट giving any recommendation because again that's an individual play, but that's how you ideally try and do it. Okay. Thanks a lot. Yeah, that's pretty much it from our side for today's call. Thank you so much everyone for joining. We'll kind of put this on. One last question. Hello. Sure. Hello. Go on. Sir, I want to know your views about Dynasty Tech IPO. I don't speak about any companies which are already listed. Like I haven't read Dynasty, so if I share any views, that would essentially be reading from a screener, which I don't like to do. But we'll continue to talk about primary issues which are coming in as a theme of the show. Thank you so much, guys, for joining. Okay. Thank you.